It is a process by which compromise or agreement is reached while avoiding arguments and disputes. Now, negotiation is what? It is a process by which compromise or agreement is reached. That means whatever differences are there, that will be eradicated, and both the parties or you yourself come to a compromising position or an agreeable agreement, or an agreement is reached. So while avoiding argument and disputes. So finally, there are no argument and disputes left when we reach to the final stage of negotiation. Basically, in any disagreement, individual understandably aim to achieve the best possible outcome for their position. However, the principle of fairness, seeking mutual benefit, and maintaining a relationship are the key to a successful outcome. Now, coming to stages, or you can say process of negotiation, like how this negotiation is being done. So in order to achieve a desirable outcome, it may be useful to follow a structured approach of negotiation. Like, for example, you can say in a work situation or meeting, you may need to be arranged in which all parties involved can come together. So everybody need to be there. Now, in such a situation, the process of negotiation will include these stages, which are mentioned over there on your screen. The first one is preparation. So before any negotiation takes place, a decision need to be taken, and as to when and where a meeting will take place to discuss the problem and who will attend. Also, setting a limited time scale can also be helpful to prevent the disagreement continuing. So you need to make certain preparations like who is going to attend the meeting, who will be the negotiator, what will be the time limit, where the meeting will take place. So that will come under the heading preparation. Second stage would be discussion. During this stage, individuals or members of each side put forward the case as they see, that is, their understanding of the situation. So one by one, both the parties come together, one after the other, and they put forward whatever the situation, whatever the case they see, and the understanding of the situation. They share their understanding of the case, of the situation, with the negotiator or with the other party. So basically, both the parties come together and share their side to each other as well as to the negotiator. So that is discussion. So basically, in this part, discussion, there are subparts also. These subparts may include questioning, like if one party is saying something, the other party may question it, like if you have done certain action, why you have done that thing. So that is questioning. Next is listening. We have already studied about listening, that listening is just not hearing. Listening is understanding why a person is saying certain statement. So that is listening. Also clarifying, like if another party has certain doubts of what the first party is saying, they may clarify, like if I'm saying this statement, if the other party is not understanding, they may ask, please frame your sentence, or please clarify why you have done this or why you are saying this. So basically, this discussion stage will also include questioning, listening, as well as clarifying. Clear? Again, is a next step will be clarification of goals. Basically, from the discussion, the goals, interest, and viewpoint of both the side of the disagreement need to be clarified. Also, it is helpful to list these factors in order of priority. Through this clarification, it is often possible to identify or establish some common grounds. Clarification is an essential part of negotiation process, which without it, misunderstandings are likely to occur, which may cause problem and barrier to reach a beneficial outcome. So if
clarification is not done, clarification of goals are not done, it is not possible that you reach to a beneficial outcome. So clarification of goals are very much important. Next step is negotiate towards a win-win outcome. So this stage focus on what is termed a win-win outcome, where both the sides feel they have gained something positive through the process of negotiation, and both sides feel their point of view, which has been taken into consideration. Also, a win-win outcome is usually the best result. Although this may not always be possible through negotiation, it should be the ultimate goal. So both the party should reach to a win-win outcome. कि किसी भी पार्टी का नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों ही पार्टी एग्री होनी चाहिए और दोनों ही पार्टी का कुछ ना कुछ पॉजिटिव उनको गेन होना चाहिए. So that is known as win-win outcome. Next is agreement. Agreement can be achieved once understanding of both the sides' viewpoints and interests have been considered. It is essential for everybody involved to keep an open mind in order to achieve an acceptable solution. An agreement need to be made perfectly clear so that both sides know what have been decided. Yeah, so that is the agreement part. And the last one is implementation of a course of action. That is, from the agreement, a course of action has been implemented to carry out the decision. So this is process of negotiation. Is it clear? Is the process of negotiation clear? And if anything is not clear, you can ask now. Negotiate towards a win-win. Negotiate towards a win-win outcome. अच्छा, अभी मान लीजिए, take an example कि आपका और मेरा कुछ झगड़ा हो गया है किसी चीज को लेकर के. Like if you are saying कि I want a certain thing, I am also saying I also want a certain thing. अभी हम दोनों का conflict हो गया है किसी चीज को लेकर के. Like we are in library and we are fighting for a book. कि आपको भी चाहिए वही बुक और मुझे भी चाहिए वो बुक. तो ये हो गया एक हमारा कॉन्फ्लिक्ट, राइट? अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में विन विन सिचुएशन क्या होगा कि वो बुक आपको भी मिले पढ़ने के लिए और वो बुक मुझे भी मिले पढ़ने के लिए. या अब ऐसा हो सकता है कि हम निगोशिएट करेंगे तभी हमारा ये विन विन आउटकम पॉसिबल है, यानी कि वो बुक आपको भी मिले तो आपका भी विन आउटकम होगा और वो बुक मुझे भी मिले तो वो भी एक विन आउटकम होगा. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू गो थ्रू नेगोशिएशन. ईदर यू गो फर्स्ट और आई गो फर्स्ट. ठीक है, तो हम एक एग्रीमेंट कि you take the book first for few days, for 3 days you can keep the book. After 3 days, please on time return the book to the library so that I can get it issued. So this will be a win-win outcome with negotiation. Negotiation का मतलब we have come to an agreement. किसी एक पार्टी ने कहा अच्छा ठीक है, you take first, I'll take afterwards. So that is a win-win. दोनों को मिला but थोड़ा आगे पीछे. So that is a win-win outcome. ठीक है. और अगर एक ही टाइम पे दोनों को चाहिए तो it will be like librarian will say कि you go and get the Xerox, both the party get the Xerox of the book and take at a time. So that could also be one negotiation, right? So anything could be a negotiation जो कि एग्रीएबल हो दोनों ही पार्टीज को, यानी कि मुझे और आपको दोनों ही एग्रीएबल होगा. अगर इस सिचुएशन में लाइब्रेरियन इज सेइंग कि अभी अगर दोनों को चाहिए तो गो टेक द बुक, गेट द जेरोक्सेस, 2 कॉपीज आप लोग जेरोक्स कराइए, एक आप लीजिए एक आप लीजिए. You both have reached to a win-win outcome. Got my point? Means like it is a competition. No, it is not a competition. It is a negotiation. It is not competition. It's negotiating. कि अगर आपको भी कुछ चाहिए और मुझे भी कुछ चाहिए, competition is like कि we will fight कि नहीं मैं पहले लूंगी and you will say no मैं पहले लूंगी. But difference between negotiation and competition is there कि we come to a what do you say? Come to a positive outcome कि हाँ इसका solution क्या होगा. Whereas in competition we will be like कि नहीं मुझे आपको हराना है. I want this book. I'll keep for whole the week. I'll win.
I'll not give to you. So only one side win, one side lose outcome is there in competition. Whereas in negotiation, we have win-win, like both the parties are winning. क्योंकि हम एक negotiation agreement पे पहुंचे कि पहले 3 दिन एक पार्टी मैं रखूंगी बुक, अगले 3 दिन आप रख लीजिएगा बुक. So that is a win-win outcome. थोड़ा आगे पीछे थोड़ा आपने adjust किया, थोड़ा मैंने adjust किया. That way we come to an outcome. Is it clear now? Yes. It is not competition. Don't misunderstood with competition. Negotiation is like we negotiate, we come to a compromising position, we come to an agreement कि हाँ थोड़ा मैं adjust कर लेती हूँ, थोड़ा आप adjust कर लीजिए. It's like that. Got it. Great. So I believe negotiation is clear. इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में. This much is sufficient for you. चलो. Now coming to customer relationship management. Any idea about this? So basically CRM or customer relationship management is the combination, or you can say practices, strategies, and technologies. It is a combination of practices, strategies, and technologies that companies use to manage and analyze customer interaction and data throughout the customer life cycle. So that is customer relationship management. So basically it is a process in which a business or other organization administers its interaction with customers, typically using data analysis to study large amount of information. Also, they allow business to learn more about their target audience and how to better cater for their needs, thus retaining customer and driving sales growth. So that is customer relationship management. Now, why you'll say, what is the need of customer relationship management? What are the benefits? Why is it necessary? So the use of CRM system can benefit the organization ranging from small businesses to large corporations, like everywhere. Whether it is a small business or a large organization, CRM is always beneficial. Through, you can say, having customer information such as past purchases and interaction history easily accessible can help customer support representative provide better and faster customer service. If you have previous data of customers, like previously customer ने क्या purchase किया है और how they have contacted us, अगर आपके पास ये सारा history होगा, so it will be easier कि आप और अच्छे से आपका customer relationship build कर पाएंगे, manage कर पाएंगे. Also, collection of and access to customer data can help business identify trend, that is what is going on currently, and insight about their customer through reporting and visualization features. So these are the benefits of CRM. कि why is it important? क्यों necessary है हमारे पास customer relationship management? Now, there are few components of CRM, you can say. These components are like marketing automation or Salesforce automation. Then you have workflow automation, lead management, HRM, analytics is there, AI, artificial intelligence, project management, integration with other softwares are there. And what types of CRM technology we use? Basically, there are 4 main vendors of CRM. These are Salesforce, Microsoft, SAP, and Oracle. These are the major ones. Others are also there. So this was about customer relationship management. You all please go through your syllabus, whatever material you have, and study from there. Customer relationship management. Next, and the last topic over here, we have information and communication technology. Now, it is also known as ICT or ICTS, that is information and communication technologies.
Basically, ICT is technology that is used to handle communication process such as telecommunication, broadcast media, intelligent building management system, audiovisual processing and transmission systems, and network-based control and monitoring functions. So wherever communication is taking place, if we talk about IT, it will be ICT. यानी कि communication हम जब भी communicate करते हैं और जब वहां पे टेक्नोलॉजी का यूज होता है तो वहां वी कॉल इट एज ICT, that is information communication technology. So basically, ICT is often considered an extended synonym for information technology. Its scope is in some way broader. ICT is often used in academics. We have used ICT in academics and educational institution for audio visual presentation. Like right now we are having. Right now what we are having? We are having a audio visual presentation. What is this? This is a very fine example of information communication technology. You can quote this example in examination also. We have learning management systems and assessment apps to help assess the progress of students. अभी ये जो हमारा classes हो रहा है, you can attend live also, और YouTube पे हमारा university का channel है जहाँ पे आप recorded videos भी check कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. तो this is very good, very fine examples of ICT in education and academics. Now, ICT system consists of the following components. What are these components? We have cloud computing, software, hardware, transactions, communication technologies, data, and internet. So these all will come under component of ICT system. ये सारे के सारे. Next is ICT systems are used in a number of environment. कहाँ हम use कर सकते हैं हमारे ITC या use होता है. So these are offices, shops, factories, in aircraft, ship, and many more. Everywhere, I'll say everywhere, ICT is used for communication. Also, they are also used in field such as in communication, medicines, and farming. ICT systems are in some way common. Over here it is mentioned farming. Can anyone of you tell me how communication and ICT, sorry, farming and ICT are linkable? कैसे, क्या relation है farming और communication का? Tell me. किसी को समझ में आया? यहाँ लिखा हुआ है ना farming. Can you people read? So ICT systems are in some way common and ordinary, yet they are extraordinary in how they can get extra capabilities to what we do and want to do. So this was ICT. With this, we are done with all the blocks of your syllabus of business communication. Now, as you people have requested a quick revision, we will do for block A and block B. Sorry, block 1 and block 2. Also, please provide me your email addresses so that I can note down and send the PPT. Just tell me few email addresses and I'm having just one email address, that is of Amrita. And please provide me just few more and please circulate the PPT among you all. Okay, I have this one. Sufficient. gmail.com. Okay, so I'll be sending the PPT to these 3 email addresses. You all can get from these people. Now coming to block 1 and block 2 again.
So in block 1, the very first thing we had was introduction of communication. So in introduction of communication, you need to give the meaning of the term communication. What do you understand by the term communication? From where the term communication is being derived? कहाँ से derive हुआ है? ये communication term is being derived from a Latin word that is communis, which means common or to make general. कि जो knowledge आपके पास है, when you share that knowledge, it becomes common. So that is communis. So this process of sharing is known as communication. So you need to mention the meaning, define communication, give give the term from where communication is being derived. So this is an introduction part. Next, over here, we have two definitions we have discussed. One is by Keith Davis and the other one is from Wikipedia. Kindly learn these definitions by heart and please mention the definitions along with the author name in your examination. जरूर से mention करिए जहां पर भी you are having these definition. Please learn them and quote them in examination and highlight also. Okay. Next over here we have objectives of. But can you people see the slide? Okay. So we have objectives of business communication. What are these objectives? Stronger decision making. When you communicate more, when you tell what you are feeling, what knowledge you have, when you share it, definitely it will result in better, in stronger decision making. Increase productivity. When clear instructions are being given to employees, when they are being told ki in what way they need to perform their task, definitely productivity will be increase in a positively way. Then we have steadier workflow. When employees know, when people know what they have to do and in what order, जो workflow होगा वो बहुत positive होगा और बहुत जल्दी होगा. So that is this term, steadier workflow. That is very smooth and fast workflow. जब आपके पास clear instructions होते हैं तो easy हो जाता है ना काम करना. So जब तक आपको communicate नहीं किए जाएंगे, whether in written form or in oral form, you'll not be able to do work steadily, that is fast and smoothly. So that is why business communication is important. Next is stronger business relationships and enhanced professional image. आप आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, या जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, या यू कैन से कोई प्रोडक्शन यूनिट है, तो आप क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या मार्केट करते हैं, जब तक आप वो क्लियरली फ्यूचर एम्प्लॉयज को या आपके कस्टमर को कम्युनिकेट नहीं करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा इमेज कैसा बनेगा? Definitely no. So whatever you are doing, please communicate towards जिनको भी वो मोटिव सर्व करना है. यानी कि हो सकता है जो नए एम्प्लॉयज आपको ज्वाइन करने वाले हैं, वहां भी जरूरी है कि कम्युनिकेशन हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज जाए. ऑल्सो अगर आप कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसका भी एक अच्छा इमेज थ्रू एडवर्टाइजिंग आप कस्टमर्स को पहुंचाना चाहोगे. सो दैट इज done through business communication only. So it will result in a stronger business relationship as well as enhanced professional image. Next is clearer promotional material, providing advice and providing orders, also suggestions. So these are all part of communication only, कि किसी को advice देना या किसी को order देना या suggestion देना. So this is all part of business communication and comes under objectives of business communication. Clear? Also, we have persuasion. Okay, persuasion is like कि
जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं, जब तक हम किसी को अपनी बात ठीक से समझा नहीं सकते, हम उन्हें परसुएड नहीं कर सकते. दैट मीन्स वी कैन नॉट कन्विंस एनीबडी to do something. So for persuasion, for convincing, business communication or communication is important. Next we have education or warning or raising morale or motivation to give and receive information, provide counseling or improve discipline. So these are the objectives of business communication. Next we have elements of communication, or you can also say these are the part of communication process. क्या है communication process? Anybody can tell me among you, please? जिसने क्लास सुना हो, can anyone come up and tell me what is process of communication and what are these elements? Anybody? I think these all are how we communicate to others. These Tell are me about that. how we communicate. No, beta. These are, I'll tell you, these are, it is basically the process of communication. तो जो process of communication में जो ये components होते हैं, these are, ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे? Sender, encoding, message, decoding, receiver, noise and feedback. These all are elements of communication. Communication के elements है ये process के. तो ये process कैसे start होता है? This process start from here. Sender, then we have encoding, we have a message, then we have a decoding to the receiver. And in between, we may have this noise as a barrier, whereas when it received, when the communication is being received by the receiver, he may or may not give a feedback. अभी इसको इजीली मैं आपको समझाती हूँ. अभी मुझे आपका क्लास लेना था, लाइक अभी आप क्लास सुनोगे और मैं क्लास लूंगी आपका, तो इसके लिए वी नीड अ कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है, सो कम्युनिकेशन चैनल क्या है हमारा? दिस ऑनलाइन क्लास इज आवर कम्युनिकेशन चैनल. ठीक है, इसके थ्रू हमारा इंफॉर्मेशन फ्लो होगा फ्रॉम मी टू यू पीपल. सो ओवर हियर, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं या क्लास ले रहे हैं, इसी का एग्जांपल लेंगे. सो ओवर हियर, हु इज द सेंडर? टेल मी फास्ट. Who is the sender? You, ma'am. Sender. Encoding. Encoding is a way कि मैं जो बोलना चाहती हूँ वो मैं आपको किस तरह से समझाऊंगी. So that is encoding. कैसे? Through Zoom meeting. हाँ, through, very correct. Through Zoom meeting, one way. The second way is PPT presentation is over here. So आपको स्क्रीन पे जो मैं बोल रही हूँ वो आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है. So it is getting very clear to you. Right or wrong? So Yes. encoding. And what is the message? What you are seeing on your screen right now is the message. I want to convey you the process of business communication is the message. Correct? Yes. Yes. Yes, ma'am. Next one is decoding. अभी decoding comes, ये जो decoding है ना, ये अब आपके end पे होगा. मेरा रोल यहाँ पे खत्म हो गया मैसेज पे. ओके, अभी आपका रोल स्टार्ट होगा decoding पे. अभी आप You decoding have to understand जो that आपने one, देखा, what you are saying. हाँ, जो भी आपने देखा आपके स्क्रीन पे या जो भी मैंने बोला, आप उसको सुन के, उसको देख के, उसको समझोगे. सो दैट इज डिकोडिंग ऑन योर पार्ट. दैट इज यू द रिसीवर. ठीक है, अभी हो सकता है, अच्छा ये पूरा हमारा प्रोसेस हो गया. यहाँ से बेसिक प्रोसेस ये सेंडर से रिसीवर ही होता है. सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, डिकोडिंग टू द रिसीवर. दैट्स इट. इतना ही होता है हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस. यानी मैंने कुछ बोला, आप तक वो बात पहुंच गई. Whatever we are getting doubt, that is feedback. हाँ, whatever doubt you are getting, or sometimes I ask ना, आपको समझ में आया? What you people say? Yes or no? That is Yes. also a feedback. Okay, that is also a feedback. मैं आपको क्लास में क्यों पूछती हूँ कि ये क्लास समझ में आया कि नहीं आया? ताकि जो कम्युनिकेशन हुआ आपके मेरे बीच, उसका फीडबैक मुझे मिले. So that अगर क्लियर नहीं है तो we can again go through the same channel. ठीक है? So that is why feedback is very, very important in a communication
चैनल, ठीक है। And what is decoding? डिकोडिंग इज हाउ यू आर टेकिंग माई मैसेज। हो सकता है कि आपने म्यूट करके रखा हुआ हो सिस्टम और आप यू आर बिजी समवेयर एल्स, तो ये जो डिकोडिंग हुई ही नहीं आपके एंड पे, आप तक मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैंने तो भेजा, भेजा, एनकोडिंग करी, मैसेज प्रिपेयर किया, पहुंचाया, बट आपने क्या किया, आप म्यूट करे हुए हो आपका सिस्टम, आपका फोन, वट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, तो आप डिकोडिंग कर रहे ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए यू आर लिसनिंग प्रॉपरली, तो जो कुछ भी आपने स्क्रीन पे देखा, आपने स्क्रीन पे क्या देख रहे हो, टेल मी। Process. आप प्रोसेस देख रहे हो, Like हाँ, देयर इज अ डायग्राम यू कैन सी, एंड मोर ओवर ये डायग्राम के पीछे मेरी वॉइस इज ऑल्सो कमिंग विच इज एक्सप्लेनिंग द प्रोसेस, राइट। सो ओवर हियर आप क्या कर रहे हो, आप डिकोड कर रहे हो मेरे मैसेज को, यानी कि मैं जो आपको कम्युनिकेट करना चाहती हूँ, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मैंने अपने एंड से आपको पिक्चर भी दिखा दी, आपको उसका फिगर दिखा दिया, आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी जब आप उसको समझ रहे हो, देख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, decoding. Decoding. मेरे मैसेज को, ठीक है। सो दैट इज डिकोडिंग ऑन द पार्ट ऑफ रिसीवर, जो कि आप करोगे। सो दैट इज डिकोडिंग। मैंने क्या किया, मैंने मैसेज को एक इमेज फॉर्म में रखा, पीछे से मेरा ऑडियो है, सो दैट इज इनकोडिंग। मैंने इनकोडिंग करी उस मैसेज की। आपने क्या करा, आपने देखा, आपने सुना, आपने समझा, आपने डिकोडिंग की, करेक्ट, ठीक है। हाँ जी, Clear, ma'am. रिसीवर तक आप तक पहुंच गया, आपको समझ में आया, आपने कहा हाँ, आपको समझ नहीं आया, आपने कहा ना। सो दैट इज द फीडबैक। या आप क्वेश्चन कुछ पुटअप कर रहे हो कि ओके मैम, ये जैसे ये आपने पूरा प्रोसेस समझाया ना, व्हाट इज डिकोडिंग, सो दैट इज ऑल्सो अ फीडबैक, ठीक है। सो दिस इज the process. Now coming to this noise. Noise is also known as barrier to communication, यानी कि हो सकता है क्लास में मैं एक्सप्लेन करते करते नेटवर्क का प्रॉब्लम कुछ हो जाए, या बीच में कुछ ऑडियो का इशू हो जाए, या मैं जरा देर कुछ म्यूट करके कुछ बिजी हो जाऊं कुछ काम में अपने, सो दैट विल बी अ बैरियर। जो मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ आपको, वो एक्सप्लेन नहीं कर सक रही हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। वो रीजंस क्या है, मे बी अ टेक्निकल इशू, मे बी अ इंटरनेट इशू, और मे बी माई पर्सनल इशू और योर पर्सनल इशू। So those will be known as noise, or you can say barriers to communication. There are various barriers to communication, various noises, जो अभी हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। अभी टेल मी, प्रोसेस इज क्लियर और नॉट। Yes, ma'am. Clear. अगर आपके एग्जाम में आ रहा है राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो ये जितने भी एलिमेंट्स है, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक, ये सब कुछ है आपके एलिमेंट्स, जो कि यहाँ पे आप प्रोसेस के फॉर्म में देखोगे, ठीक है। तो प्रोसेस पूछ रहे हैं या एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछ रहे हैं, तो ये पूरा एक्सप्लेन करिए, ठीक है। Yes, ma'am. Clear. नेक्स्ट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कि नॉइज वाला पार्ट, ठीक है। क्या क्या है बैरियर हमारे पास, जस्ट क्विकली रीड आउट एंड टेल मी, मैं कौन सा एक्सप्लेन करूं। क्विकली रीड करिए, जिसने जिसने अटेंड नहीं किया फटाफट रीड करिए एंड टेल मी कौन सा बैरियर मैं एक्सप्लेन करूं। Explain all in shortly. एक्सप्लेन ऑल, अरे ओके, डू Just वन mentioning थिंग। about barrier and हाँ just जी, a little bit meaning, ma'am. Just आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। आप प्लीज मेरा फर्स्ट वाला वीडियो चेक करिए, रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएंगे सारी। meaning of barrier. Just meaning of the barrier. Just little मीनिंग ऑफ explanation about बैरियर, it. मीनिंग ऑफ Yes, बैरियर, ma'am. ओके, मीनिंग ऑफ बैरियर इज हियर,
यहाँ पे जो ये नॉइज है, यानी कि जिस वजह से बैरियर्स आर बेसिकली अ रीजन कि ये कम्युनिकेशन प्रोसेस क्यों पूरा नहीं हो रहा है। मैं कुछ बोल रही हूँ और वो बात आप तक नहीं पहुंच रही, तो किस रीजन से नहीं पहुंच रही? These are that reasons, barriers to communication. That could be mechanical barrier, internet issue, personal barrier, मैं खुद नहीं, मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गया जो मैं आपसे प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सक रही हूँ. Semantic और language barrier, maybe I am speaking in some foreign language जो आपको समझ में नहीं आ रही. That could be a barrier. Then we have a status barrier. हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान की बात सुनना ही नहीं चाहते या उससे आप एक्सप्लेनेशन चाहते ही नहीं है, तो जब आप ऐसे इंसान से आप बात ही नहीं करना चाहते या एक्सप्लेनेशन लेना ही नहीं चाहते, तो व्हाटएवर वो कुछ भी बोले तो आपको समझ में नहीं आएगा. सो दैट इज अ स्टेटस बैरियर. देन वी हैव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर्स आर आल्सो देयर, जहां पे कम्युनिकेशन का जो फ्लो ऑफ चैनल होता है, ये प्लीज आप गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो, ज्यादा क्लियर हो जाएंगे सारे के सारे बैरियर्स. तो एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन इज कि व्हाई द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट कंप्लीटेड. सो दीज आर द रीजंस व्हाई कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्यों नहीं कंप्लीट होता है. ऑल्सो वी हैव अदर बैरियर्स. अदर बैरियर्स क्या हो सकते हैं कि आपका लैक ऑफ अटेंशन, आपको अटेंशन ही नहीं है, आप सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है. देयर आर डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शंस कुड भी हो सकता है कि बाहर से कुछ आवाज आ रही है या कुछ हो रहा है आपके बैकग्राउंड में, आपको वहां ज्यादा इंटरेस्ट है देखने में, यू आर नॉट लिसनिंग टू द क्लास. और इररिलेवेंस ऑफ द रिसीवर, हो सकता है कि टॉपिक कुछ और ही है, आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग एल्स. जब टॉपिक कुछ और है, मैं कुछ और बोल रही हूँ, तो आपको समझ में क्या आएगा? कुछ भी नहीं. So that is irrelevance of the receiver. Then we have difference in perception or viewpoint. कभी कभी कैसा होता है कि we try to explain something, हम तो वो बात ठीक तरह से समझा रहे, मगर आप वो बात समझ रहे नहीं. क्यों नहीं समझ रहे? क्योंकि हमारा व्यू पॉइंट अलग अलग है. आई एम सेइंग कि लेट्स से टेक अ एग्जांपल कि फास्ट फूड इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. आई एम सेइंग दिस सेंटेंस कि फास्ट फूड इज वेरी गुड फॉर हेल्थ. मेरा मानना है, दैट इज माई बिलीफ, मगर आपका मानना नहीं है. अगर मैं इस पॉइंट पे या इस टॉपिक पे एक दिन एक पूरा प्रेजेंटेशन भी दूं, तब भी आप मेरी बात पे एग्री नहीं करोगे. क्यों नहीं करोगे? क्योंकि मेरा मानना गलत है. हाउ कैन आई से कि फास्ट फूड इज गुड फॉर हेल्थ? ऑब्वियस ना. तो Because that is your aspect. करेक्ट, दैट इज माई व्यू पॉइंट, दैट इज माई परसेप्शन. और आपका परसेप्शन क्या है? नो, फास्ट फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, वी शुड टेक वेरी हेल्दी डाइट और हेल्दी फूड, राइट. तो मेरा परसेप्शन कुछ और है, आपका परसेप्शन कुछ और है. आप किसी टॉपिक पे इफ आई एम सेइंग समथिंग, आप वो चीज समझोगे ही नहीं, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट कुछ और है. अरे ये बिल्कुल बकवास कर रही है, ये क्या बोल रही है, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स. So that is difference in perception. Then we have physical disabilities, like किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो तो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, या कोई ठीक से बात नहीं कर सकता हो, दैट इज स्पीच डिफिकल्टीज, तो भी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा. Then we have language differences. आप कोई और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, मैं कोई और लैंग्वेज में बात कर रही हूँ. Already done. डन. सो ये हो गया हमारा अदर बैरियर्स. अभी क्लियर है बैरियर्स प्रोसेस? ये इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जरूर से आएगा एग्जाम में. डोंट लीव दिस टॉपिक. Then we have principle of communication. We have clarity. Whatever हम जो communicate कर रहे हैं, that need to be clear. Attention has to be paid. Feedback need to be given. Informality has to be there. Consistency has to be there. Timeliness and adequacy. ये पूरा का पूरा फर्स्ट वीडियो में फिर से एक्सप्लेनेशन चेक करिए. स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो अभी के अभी कोई एक प्रिंसिपल या एक दो प्रिंसिपल आप पूछ सकते हैं. आई कैन एक्सप्लेन अगेन. अदरवाइज गो थ्रू द फर्स्ट वीडियो. Ma'am, what's the meaning of adequacy? Last one. Last one. Yes, ma'am. Adequacy is like मैं जो मैसेज आपको दे रही हूँ, लाइक आई एम एक्सप्लेनिंग यू प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मगर मैं बात कुछ और ही कर रही हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट कि आज कौन सी मूवी देखी जाए, राइट. सो व्हाट, मुझे बोलना क्या चाहिए? आई नीड टू स्पीक, बट आई शुड स्पीक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन. बट व्हाट आई एम स्पीकिंग विच मूवी इज गुड,
because today is weekend, Sunday, I'll go and watch some other movie, or I'll watch some this, or I'll go and do something else. So what I am supposed to do, I am supposed to explain you principle of communication. Instead of that, I'm talking about some rubbish, right? So that is principle of adequacy, ki which message has to be delivered to you, must be delivered. यानी कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन का, तो वो ही मैं आपको डिलीवर करूं, ना कि मैं कौन सा मूवी देखूंगी, या दिन अच्छा है या संडे है तो आई विल गो एंड वॉच सम अदर मूवी. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिक्वेसी, यानी कि एडिक्वेसी नीड टू बी देयर, जो डिलीवर होना चाहिए वही हो. फाइन. सो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन. चलिए, ये हो गया. Then we have channel of communication, again very important from examination point of view. अभी हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन. उसमें आपको ये सारे के सारे कम्युनिकेशन चैनल एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, या हो सकता है जो अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है, उसमें से कोई एक चीज आपको पूछी जाए एग्जाम में. हो सकता है या तो पूरे के पूरे, या इसमें से कोई एक भी पूछ सकते हैं. अभी क्या है अपवर्ड कम्युनिकेशन, जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोलते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि टॉप मैनेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको डाउनवर्ड बोलते हैं. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन विद इन द सेम लेवल, विद इन द सेम डिपार्टमेंट जब कम्युनिकेशन होता है, दैट इज हॉरिजॉन्टल. डायगोनल is between the levels, or you can say between the departments जब communication होता है, so that is diagonal. It could be upward or it could be downward or either ways, दोनों भी हो सकते हैं. So that is a diagonal one. And the last one is grapevine. Grapevine के को फिर से डिवाइड किया हुआ है types of grapevine communication में. You can see here we have a single strand, जैसे कि एक ही डिपार्टमेंट में एक पर्सन से दूसरे एक्स पर्सन तक इंफॉर्मेशन जा रही है. देन वी हैव अ गॉसिप चेन. गॉसिप चेन में क्या होता है, अ पर्सन ए इज सिटिंग with a group of B, C, D, E, F, G, H, I, and he is telling some information to everybody at a time. So that is a gossip chain. आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे. Yes, ma'am. या नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब ऐसा हो भी सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है, यानी कि इंफॉर्मेशन ए से एफ को जा रही है बट बी को नहीं जा रही. अगेन इंफॉर्मेशन एफ से के और जी को जा रही है बट ई तक नहीं जा रही. तो इंफॉर्मेशन किसी के पास जा रही है, किसी के पास नहीं जा रही है. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी. देन वी हैव क्लस्टर. क्लस्टर में इंफॉर्मेशन ए के पास है, जिसने इंफॉर्मेशन पास करी बी को, सी को और डी को. बी और सी ने वो इंफॉर्मेशन अपने पास रखी, बट वेयर एज डी हैज पास्ड फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू ई, एफ एंड डी, जी. Again, E and F have kept the information to themselves, whereas G has again forwarded the information to H and I. So that is cluster grapevine communication. Clear? Further clarity के लिए I'm again saying refer the first video. Now again we have types of communication. Under types we have verbal communication. It could be oral or written. नेक्स्ट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास है बॉडी लैंग्वेज, स्पेस और प्रॉक्सिमिटी, यानी कि कितनी दूर बैठ के हम बात कर रहे हैं या कितनी पास बैठ के हम बात कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव टाइम एंड पैरालिंग्विस्टिक, यानी कि टोन एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस इज नोन एज पैरालिंग्विस्टिक. And the last one is visual communication. So these are types of communication under verbal and non-verbal heading. इसमें से कुछ पूछना है, कुछ डाउट है जिन्होंने क्लास अटेंड किया है, लेकिन आस्क. Then we have formal and informal communication. एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों ही टाइप की कम्युनिकेशन हो सकते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल. बेसिकली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. वेयर एज
जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है तो कोई प्री डिफाइंड चैनल नहीं होता इसका कम्युनिकेशन का, ये किधर भी फॉलो हो सकता है। जैसे कि ग्रेप वाइन हमने पढ़ा, ग्रेप वाइन एग्जाम्पल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। उसके बाद यहाँ पर सॉरी, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल एंड डायगोनल, ये चारों एग्जाम्पल है हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के, वेयर एज ये जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है ये एग्जाम्पल है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। ठीक है Ma'am, in second unit in PDF, we have 7 C's of communication. विच स्लाइड? Not in PPT. हाँ, इट्स नॉट देयर इन द PDF. पीपीटी, आपके नोट्स में होगा, पढ़िए 7 C's। And we have models of communications हाँ, वो भी पढ़ने as की। total. हाँ पढ़िए, वो सिलेबस में है ना आपके, पढ़िए। Yes. एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड इन जस्ट 6 क्लासेस। Okay. Is all are important models of communication. या मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन आज इम्पोर्टेंट, पढ़िए। सो ये हो गया हमारा कम्युनिकेशन। नाउ प्लीज गो थ्रू योर, आई विल स्टॉप शेयर ओवर हियर। प्लीज गो थ्रू योर सिलेबस, जो भी पांचों के पांचों यूनिट हैं आपके पास, यू प्लीज गो थ्रू द सिलेबस। और प्लीज आस्क मी इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसमें से, because we just have 10 minutes. In this 10 minutes I'll quickly forward the ppt to you all. So meanwhile I'm forwarding the ppt, you please go and ask me. So I have forwarded the ppt to these 3 email ids, जिसको भी चाहिए आप लोग आपस में शेयर कर लीजिए। Okay, other than that, if any question is there, please ask me. और जितना भी मैंने पीपीटी में प्रोवाइडेड है पूरी के पूरा सब रिकॉर्डिंग्स में है, एवरीथिंग यू कैन गो, और आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुन सकते हैं क्लास। स्टिल देन एनीथिंग इज नॉट क्लियर, आई एम आस्किंग अगेन द लास्ट टाइम, प्लीज आस्क मी। सिलेबस चेक कर लीजिए और पूछ लीजिए। इम्पोर्टेंट के बारे में भी कल क्लास हुआ था हमारा, जो हमने डिस्कस किया था। यू कैन हैव 4th Feb का क्लास सुन सकते हैं आप। Yes, ma'am, we received, ma'am. Thank you. वेलकम।
Anytime you all have my email address. कुछ भी doubt है regarding business communication, please email me. I will definitely reply. Okay, ma'am. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much, Swati. Anything you people want to share, you want to say? We have few minutes left. You can tell anything regarding examination, anything you want to ask. अच्छा, मैंने आप लोगों को बार-बार बोला, nobody has responded regarding your resume or your CV. किसी ने भी respond नहीं किया. जब आप जॉब के लिए जाओगे तो आई एम श्योर मुझे जरूर याद करोगे कि मैम बोल रही थी सीवी के लिए हेल्प चाहिए है तो प्लीज आस्क मी. नोबडी responded. Yes, ma'am. Definitely, we ask you, ma'am. But we are not. Maybe I'm not ready to prepare that one Right now, because okay. still I want to study or something coaching. Then after, I'll ask you, ma'am. Okay. I'm there. My ID is there. Anytime you can contact me. Yes, We'll ma'am. discuss Sure, the ma'am. CV. I'll help you out with preparation of the CV. Anybody in your class, anybody. Yep. Yes. I'll prepare my CV and I'll send you to mail. Yes, sure, Renika. Send it to me. I'll check and tell me what changes you want. What are the areas you are looking for the change? ठीक है, वो भी मुझे सेंड करिए. जस्ट इस लाइक कि मुझे बस भेज मत दीजिए. आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस करने चाहिए, वो भी बताइए. What else? You got your date sheet? कभी है एग्जाम आपका बिजनेस कम्युनिकेशन का? See, the paper is very easy. Business communication बहुत ही easy topic है. आप पढ़ोगे तो easily you can write very good. See, एक प्रैक्टिकल पेपर यू कैन से अकाउंट्स का या फाइनेंस का हो या एक बिजनेस कम्युनिकेशन जैसे कि बहुत ही लाइट पेपर है, बट आप स्कोर उतना ही करते हो. मतलब पेपर उतना ही. कितने का आपका पेपर आने वाला है? 70 मार्क्स और 100 मार्क्स? कितने का पेपर होगा? कितने मार्क्स का पेपर है? 100 marks. 100 marks. 100 मार्क्स का पेपर है. तो पेपर अगर इजी है या लाइट है तो उसका वेटेज कम नहीं हो जाता है. सो डोंट टेक एनी एग्जाम लाइटली कि ये प्रैक्टिकल पेपर है तो हम इसको ज्यादा पढ़े या ये थ्योरी पेपर है तो जरूरत नहीं है उतना पढ़ने की. वी कैन राइट एनीथिंग. इफ यू राइट वेल देन ओनली यू आर गोइंग टू स्कोर वेल. हमेशा याद रखिए ये बात. अगर आप अच्छा लिखोगे नहीं तो अच्छा स्कोर नहीं कर सकोगे. Exam on 2nd, ma'am. एग्जाम इज ऑन 2nd. ओके. चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अच्छा लिखिए. Thank you. सो प्रैक्टिकल पेपर हो या थ्योरी पेपर हो, वेटेज उतना ही होता है एग्जाम का. मार्क्स उतने ही होते हैं. तो इट्स नॉट नेसेसरली कि थ्योरी पेपर है तो उसको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. वी कैन राइट एनीथिंग. इफ यू राइट एनीथिंग वी विल गिव मार्क्स एनीथिंग. राइट. जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम कुछ भी पेपर में लिखेंगे एंड वी कैन स्कोर, ऐसा नहीं होता है. सो राइट वेल. जो भी पेपर है राइट वेल. डोंट टेक एनी पेपर लाइटली क्योंकि ये आपका लास्ट चांस है आपके डिग्री की परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए. सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि किसी भी पेपर को लाइटली मत लीजिए. इजी है तो स्कोर करना इजी होगा, इसलिए अच्छा पढ़िए. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. Yes, ma'am. Okay. आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए, with this I'll take your leave. I hope you all have enjoyed the classes.
Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. That's Thank you, ma'am. welcome. So I'm taking your leave. You all can also leave the class. And all the best for all the examination. And I'm looking forward to hear from you all. कभी भी contact कर सकते हैं आप लोग. You have the meeting. Great. Bye. Take care. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Take care. You too. Bye.